My dear viewers, Assalamu alaikum. Today I am again here with explanation of the poem All the World's a Stage by William Shakespeare. A very famous poem of a very famous poet in the history of English literature. I have tried my level best to explain it very well, for the students especially, for the students of grade 12 from their new course. I hope it will be easy for you to understand. Don't forget to press like button, share my channel and subscribe it if you have not subscribed before. I'll wait for your kind comments as well. All the world's a stage. विलियम शेक्सपियर ने इस दुनिया को एक स्टेज से तशबीह दी है, एक स्टेज ड्रामा से तशबीह दी है. जैसे एक स्टेज ड्रामा में एक्टर्स स्टेज पे आते हैं, एक तरफ से वो एंटर होते हैं स्टेज पे, अपना रोल प्ले करते हैं, अपने डायलॉग्स बोलते हैं, उन पे एक्शंस करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, जो उनका कैरेक्टर होता है वो उसको प्ले करते हैं, डिफरेंट डायलॉग्स बोलते हैं और उनकी उनको जो किरदार दिया जाता है वो उनकी कोशिश होती है कि उसको अच्छे तरीके से ऑडियंस के सामने पेश करें. और जब उनका कैरेक्टर ख़त्म हो जाता है, उनके डायलॉग्स ख़त्म हो जाते हैं, उनका पार्ट ख़त्म हो जाता है, तो वो दूसरी तरफ से स्टेज से उतर जाते हैं. अपना पार्ट प्ले करके, जो उनसे रिक्वायर्ड होता है वो उसको प्ले करके दूसरी तरफ से वो एग्जिट कर जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं. विलियम शेक्सपियर ने कहा कि ये दुनिया एक स्टेज है और तमाम मेन एंड विमेन जो हैं, मर्द और औरतें इस दुनिया में आते हैं, इस दुनिया के स्टेज पे आते हैं, अपना अपना किरदार अदा करते हैं और फिर वो जब उनका किरदार ख़त्म हो जाता है, जब उनकी पार्टिसिपेशन ख़त्म हो जाती है, उनकी इट मीन्स दैट व्हेन देयर लाइफ कम्स टू एन एंड, जब उनकी ज़िंदगी ख़त्म होने लगती है तो वो स्टेज से उतर जाते हैं, यानी इस दुनिया से चले जाते हैं. तो ये दुनिया एक स्टेज है जहाँ पे हर मर्द और औरत अपना किरदार अदा करता है, या इंसान अपने मुख्तलिफ किरदार अदा करते हैं और फिर दूसरी जानिब से वो बाहर चले जाते हैं, यानी इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं. Now see, there is a little introduction for you. One of Shakespeare's most famous speeches come from As You Like It. ये एक एक्सर्प्ट है, ये एक हिस्सा है, शेक्सपियर की बुक से लिया गया है, As You Like It. As You Like It is the name of the book in which there are different speeches. मुख्तलिफ स्पीचेस हैं जिनमें से ये एक स्पीच उठाई गई है जिसका टाइटल है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज. विलियम शेक्सपियर्स फेमस ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज मेटाफर फ्रॉम एज यू लाइक इट, द वर्ल्ड वुड बी he says that it is बेटा, जब आपसे पूछा जाए कि ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज ये कहाँ से, ये शेक्सपियर की बुक है, तो आप कहेंगे नहीं, ये शेक्सपियर की एक स्पीच है. इट इज वन ऑफ द स्पीचेस एंड फ्रॉम द बुक एज यू लाइक इट. व्हेन ही यूज द मेटाफर दैट इज स्टेज, वर्ल्ड इज अ स्टेज, स्टेज इज अ मेटाफर, के उसने विलियम शेक्सपियर ने इस दुनिया को स्टेज से तशबीह दी है कि दुनिया एक स्टेज है. द वर्ल्ड वुड बी द टेनर, दिस होल वर्ल्ड वुड बी एन इंस्ट्रूमेंट, पर्सन्स और group of people, and the stage is the vehicle.
स्टेज एक ऐसा व्हीकल है जो इन लोगों को आगे चलाता रहता है। Through extended metaphor, Shakespeare builds an evocative comparison of human life and existence to the drama his audience sees before them. Shakespeare एक evocative comparison, evocative which excites our mood, which feeling, which gives us some feeling, evocative comparison of human life, इंसान की जिंदगी को वो कंपेयर कर रहा है, या इंसान के वजूद को, उसके एग्जिस्टेंस को वो कंपेयर करता है टू द ड्रामा से कंपेयर कर रहा है। हिज ऑडियंस सीज बिफोर देम। The entire speech is an extended metaphor and itself is more like symbolism. It's a symbolism. Life, stage. Life is a stage. So men and women are portrayed as players, whereas life is portrayed as the stage. ये symbolism है ना, कि मर्द और औरतें जो हैं वो एक्टर्स हैं, वो प्लेयर्स हैं, वो एक्टर्स हैं, जबकि जिंदगी itself, life itself, वो एक स्टेज है। So the speech describes the 7 ages of being human according to the writer and shows universal characteristics of many humans as their bodies and needs change. जबकि जिंदगी जो है वो एक स्टेज की तरह है। अब ये जो स्पीच है, वर्ल्ड्स अ स्टेज इज अ स्पीच, उसमें ये इंसान जो है उसकी फिजिकल चेंजेस, पहले वो बहुत छोटा होता है, ही इज़ एन इन्फेंट, फिर वो स्कूल गोइंग बॉय होता है, फिर वो टीन एज में चला जाता है, फिर वो मेच्योरिटी की स्टेज के अंदर एंटर हो जाता है, वो मेच्योर हो जाता है, फिर वो एक प्रोफेशनल इंसान बन जाता है, जॉब करता है, फिर वो थोड़ा वाइज हो जाता है, उसके बाद वो ओल्ड एज में दाखिल होना शुरू हो जाता है। सो लाइफ ऑल्सो हैज़ इट्स एंट्रेंसेस एंड एग्जिट्स। लाइफ के भी अपने दाखिली रास्ते हैं और फिर उसके बाद इसके अपने एग्जिट्स हैं। एग्जिट्स वो फिर मुख्तलिफ स्टेजेस पे इंसान जो है वो मर जाता है। कोई अर्ली स्टेज पे मर जाता है, कोई मिडिल स्टेज पे मर जाता है, कोई बूढ़ा होके मरता है। सो डिफरेंट एंट्रेंसेस हैं और डिफरेंट एग्जिट्स हैं इंसान के। पीपल आर बॉर्न एंड डाई एंड पास इन एंड आउट ऑफ आवर लाइव्स। लोग पैदा होते हैं, फिर मर जाते हैं, हमारी जिंदगियों में दाखिल होते हैं, फिर चले भी जाते हैं हमारी जिंदगी से बाहर। सो जस्ट एज एन एक्टर प्लेज अ वेराइटी ऑफ रोल्स इन लाइफ, जिस तरह एक एक्टर जो है वो जिंदगी में बहुत से रोल्स प्ले करता है। कभी वो डॉक्टर, किसी एक ड्रामा में आप एक एक्टर को डॉक्टर देखते हैं, किसी में आर्मी ऑफिसर देखते हैं, किसी में एक बूढ़ा शख्स देखते हैं, किसी में जवान देखते हैं, किसी में एक मैरिड शख्स की लाइफ दिखाई जाती है। मतलब वो जैसे ड्रामा में डिफरेंट रोल प्ले करता है एक शख्स, इसी तरह जिंदगी में भी वही एक शख्स मुख्तलिफ रोल्स प्ले करता है। सो टू डू मेन एंड वुमेन प्ले डिफरेंट रोल्स और पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस और 7 एजेस ऑफ देयर लाइव्स। अब यहाँ पे विलियम शेक्सपियर ने इंसान की जिंदगी की 7 स्टेजेस बताई हैं। He has described 7 stages of man's life. Now see, I have briefly described those 7 stages. In the first stage, in this phase of his life, man appears as a child in the world. इंसान, आदमी जो है वो दुनिया में एक बच्चे की हैसियत से आता है। एज अ चाइल्ड ही इज अ हेल्पलेस क्रीचर। जाहिर है जब वो बच्चा होता है छोटा सा, तो वो बेयारो मददगार होता है। वो ना सही देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना खुद खा पी सकता है। जाहिरी बात है, ही इज क्वाइट डिपेंडेंट ऑन हिज मदर और ऑन हिज नर्स, वट एवर। नर्स के हाथों में होता है, अपनी माँ के हाथों में होता है, जो भी उसको उसकी केयर कर रहा होता है उसके हाथों में होता है। टोटली डिपेंडेंट ऑन देम। वही उसको फीड कराते हैं, वही उसको उठाते हैं, जब वो रोता है उसको उठा लेते हैं, उसको चुप कराते हैं, उसको सुलाते हैं, अपने टाइम पे उसको जगाते हैं, उसे खुद पता नहीं होता। So, in the very first stage, man appears into this world as a child. He is helpless creature. He cries in the arms of his nurse for one reason or the other. So he cries and vomits. उसका कोई काम नहीं होता, रोता है, जब बीमार हो जाता है तो वॉमिट कर देता है छोटा बच्चा। फिर नर्स ही उसको क्लीन करती है, ये अपनी मदर जो है वो उसको क्लीन करती है, उसके कपड़े चेंज करती है, फिर उसको साफ करती है, दोबारा से उसको फीड कराती है, फिर कभी उसको वॉमिट हो रही, यानी ही इज क्वाइट
quite helpless at this stage of his life. This is the first stage. In the next phase of his life, a man appears as a child in the world. अब वो एक बच्चा है. In the first stage, he must be an infant. वो एक शीरख्वार बच्चा है, यानी एक बहुत छोटा जिसको कुछ पता नहीं है. नेक्स्ट फेज ऑफ हिज लाइफ, ही इज अ स्कूल गोइंग बॉय. यू मस्ट रिमेंबर, ही गोज टू स्कूल विद द बैग हैंगिंग फ्रॉम हिज शोल्डर. यहाँ हम उसके नेक्स्ट स्टेज पे बच्चे को देखते हैं कि अब बैग अपने शोल्डर से लगाया हुआ वो स्कूल जा रहा है. He goes to the school creeping like a snail. और यहाँ विलियम शेक्सपियर थोड़ा सा उसको डिफाइन करते हैं कि चाइल्ड इज अ केयर फ्री पर्सन. ही वॉन्ट्स टू प्ले, ही वॉन्ट्स टू गेट अप ऑन हिज ओन टाइम, ही वॉन्ट्स टू स्लीप वेल. लेकिन इस स्टेज ऑफ लाइफ पे उसे स्कूल जाना होता है तो ही इज अनविलिंग टू गो टू स्कूल. स्कूल जाने पे वो राजी नहीं होता, उसको जबरदस्ती ही इज कंपेल्ड टू गो. सो ही क्रीप्स लाइक अ स्नेल. वो एक स्नेल की तरह से रेंगता रहता है स्कूल की तरफ. He marches to the school unwillingly. यानी वो नहीं चाह रहा होता वो, लेकिन उसे स्कूल जाना पड़ता है. So this is in the second stage of his life, he is a school going boy. In the first stage, he is an infant. वो एक छोटा बच्चा है, शीरख्वार बच्चा. In the third stage of his life, a man plays the part of a lover. इस stage पे आदमी, now he enters into his teen age. Now it is the teen age of one's life. A man plays the part of a lover. He grows into a young man full of desires, ambitions and dreams. ये एक ऐसी स्टेज होती है ज़िंदगी की कि इंसान की वो बहुत जज्बाती होता है, उसकी डिज़ायर्स उसके अंदर जागना शुरू कर देती हैं, वो ड्रीम्स देखता है. He lives in a dreamy world. He lives in utopia. उसकी एक अपनी एक दुनिया होती है. He becomes a romantic young man. इसमें ये होता है कि जो इंसान है, ये ऐसी स्टेज होती है हर एक की ज़िंदगी में आती है कि जब ही फॉल्स इन लव विद समवन. जो भी देखता है, जिस शख्स को देखता है, जिस बंदे को, विदाउट एनी रीजन और लाइक दैट, ही फॉल्स इन लव विद दैट एंड sighs like a furnace. It must be SIGHS, sighs like a furnace. और वो एक कहते हैं जिस भट्टी के अंदर वो कोयले जल रहे होते हैं, तो वो उस तरह से आहें भरता है. वो जल रहा होता है उसका दिल और वो आहें भरता रहता है, बिकॉज ही इज अ लवर. ही बिगिंस टू राइट सैड पोम्स टू हिज बिलवेड. और वो फिर सैड सॉन्ग्स भी सुनता है, उदास गाने, उदास नज़में लिखना शुरू कर देता है इन द प्रेज ऑफ हिज बिलवेड. ही कैन नॉट कंट्रोल हिज सैड फीलिंग्स. यहाँ पे वो अपनी उदासी की जो फीलिंग्स होती हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकता. सो दिस इज अ टीन एज ऑफ वंस लाइफ कि इसमें इंसान ज़रूर वन फॉल्स इन लव विद समवन. ये एक एज ही ऐसी होती है, ड्रीम्स की एज होती है, डिज़ायर्स की होती है. इसमें इतनी समझ नहीं होती इंसान को. ही इज़ नॉट सेंसेबल, ही और शी इज़ नॉट सेंसेबल इनफ टू सी द रियलिटीज़. In the fourth stage of his life, man becomes a foul-mouthed soldier who has learned queer words. Now he is emotional. He is at such a stage of his life. इसमें वो जिंदगी के ऐसे स्टेज पे होता है जब वो लड़ने मरने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है. वो यंग मैन है. नाउ ही इज़ अ यंग मैन. वो एक नौजवान आदमी है और जवानी में वो बंदे का जो ब्लड होता है ना, ही इज़ अ वार्म ब्लडेड. तो उसका ब्लड बहुत वार्म होता है. ही इमिजिएटली गेट्स इनटू द फाइट्स. लड़ाई झगड़े में फौरन वो कूद पड़ता है. सो ही इज सोल्जर. When he talks, he says he is a soldier. The poet has used synecdoche in the word of a soldier. ज़रूरी नहीं कि वो सोल्जर ही है, उसने आर्मी ज्वाइन कर ली है एज अ यंग मैन, ज़रूरी नहीं है. the poet has used synecdoche here कि वो लड़ने मरने के लिए तैयार है. At this stage, soldier presents the whole of the young age. At this stage, he tries to give himself a formidable look with a beard like a pard. Now, formidable look means causing fear, dread, commanding respect from someone, causing wonder or astonishment. ये formidable look है. With a beard like a pard, वो एक चीते की तरह, एक लेपर्ड की तरह की उसकी beard होती है, which is informal sort of beard. यानी वो informal होती है, formally cut नहीं होती, shape नहीं होती उसकी दाढ़ी.
Now he wishes to, he is emotional and jealous at this stage. He quarrels with others for his honor and grace. He hankers after temporary and bubble fame. यहाँ पे वो चाहता है कि वो फेमस होना चाहता है, क्योंकि यंग है ना वो, उसका ब्लड अभी इतना वार्म है. वो चाहता है कि वो कोई ऐसे फीट्स ऑफ ब्रेवरी दिखाए, कुछ बहादुरी के कारनामे दिखाए. कहीं लड़ाई होती है तो वो हीरो बनने की कोशिश कर रहा होता है फेम हासिल करने के लिए. और शेक्सपियर ने कहा कि ये टेम्पररी फेम्स होते हैं, बबल फेम, लाइक मतलब ये टेम्पररी होते हैं, जो उसको थोड़ी देर के लिए कुछ अपने ग्रुप के दरमियान, उन लड़कों के दरमियान उसको प्रोमिनेंट कर देते हैं, उसकी तारीफ होती है हर जगह पे. तो ही इज़ लाइक दैट. वो टेम्पररी फेम हासिल कर रहा होता है, लड़ाई करता है तो कहीं वो जीत जाता है, या कहीं कोई गेम खेल रहा है तो वो चूँकि इतना एनर्जेटिक है, वो बहुत अच्छे तरीके से गेम खेल रहा है, तो वो प्रोमिनेंट टीम का कैप्टन बन जाता है अपनी टीम का, अपने बॉयज़ के दरमियान. और ऐसे होता है कि बस वो उसको टेम्पररी फेम से उसे बड़ी खुशी मिलती है कि शायद उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया. इन द फिफ्थ स्टेज ऑफ हिज लाइफ ही बिकम्स अ जज. फिफ्थ स्टेज पे वो जज बन जाता है. अब जज भी यहाँ पे सिनेक्ट की यूज हुआ शेक्सपियर ने इसको. जज मीन्स ही बिकम्स प्रोफेशनल, ही बिकम्स वाइज, ही एंटर्स इनटू सम प्रोफेशन. अब जवानी से वो एडल्टहुड में जाता है तो वो उसको जॉब मिल जाती है, वो कोई जॉब इख्तियार कर, वो किसी जॉब को, प्रोफेशन को ज्वाइन कर लेता है, जॉब ज्वाइन कर लेता है. अब वो थोड़ा सा समझदार हो जाता है. ही बिकम्स मेच्योर एंड एक्सपीरियंस्ड इन हिज थॉट्स. द हीट ऑफ यूथ हैज कंप्लीटली कूल्ड डाउन. और वो जो जवानी की जो हरारत थी, तपश थी, वो अब बिल्कुल ठंडी हो चुकी है. एंड ही बिकम्स वेरी रियलिस्टिक. वो बहुत हकीकत पसंद बन जाता है. वो जो जवानी का जोश जज्बा था, यानी वो सब उसको बेवकूफ़ियाँ लगने लगती हैं. अब वो हकीकत पसंद है, वो रियलिटी को देखने की कोशिश करता है. ही विशेस टू ग्रैब वेल्थ बाय फाउल और फेयर मीन्स. अब फेयर मीन्स, अब यहाँ पे उसका मकसद क्या होता है? टू earn for the family, earn for, definitely there are so many people dependent on him. उसकी शादी भी हो जाती है इस स्टेज पे, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल बंदा बन जाता है. he has to earn money sometimes by fair means or by foul, यानी anyhow unfair और fair means both. वो बस उसका he means to say, शेक्सपियर means to say कि उसका मकसद जो है वो अर्निंग है नाउ. ठीक है, अब वो रियलिस्टिक हो गया ना. अब वो कहते हैं कि अर्निंग बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में. वो कहते हैं ना, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा. तो ये वो बात, ये वो स्टेज आ जाती है इंसान की ज़िंदगी की. ही बिगिंस टू एक्सेप्ट ब्राइब्स एंड दस एड्स मच टू हिज मटीरियल कम्फर्ट्स. अब फिर ये होता है कि अब शेक्सपियर ने थोड़ा सा इंसान को मटेरियल माइंडेड भी यहाँ पे बना दिया है कि वो मटेरियल माइंडेड या वर्ल्डली माइंडेड हो जाता है. समटाइम्स रिश्वत भी लेना शुरू कर देता है, और क्योंकि वो दुनियावी कंफर्ट्स हासिल करने की कोशिश करता है. ही बिकम्स ईज लविंग, आराम पसंद हो जाता है. एंड देयर फोर बिकम्स फैट. जाहिर बात है, जब वो जॉब करेगा, चेयर पे बैठ जाएगा सारा दिन, तो डेफिनेटली ही विल गेन वेट एज वेल. ही विल पुट ऑन वेट भी पुट ऑन कर लेगा. हिज बेली बिकम्स राउंड. और फिर इस स्टेज पे यही होता है कि चूंकि वो ऑफिस वर्क करता है बैठ के, तो उसकी पेट भी ज़रा बड़ा हो जाता है. ही ईट्स हेल्दी फाउल्स एंड चिकन प्रेजेंटेड टू हिम एज अ ब्राइब. और जाहिर है पैसा भी वो शायद रिश्वत लेता हो, या फिर बाय फेयर मीन्स भी अगर वो इनकम कमा रहा है तो वो खाने पीने पे उसकी तवज्जो ज़्यादा होती है. वो चिकन खाता है, फाउल्स खाता है, तो फिर ऐसे होता है कि वो मोटा भी हो जाता है. हिज आइज बिकम स्वेयर एंड ही ग्रोज द बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट. यहाँ पे वो सीरियस, आइज बिकम स्वेयर मीन्स ही बिकम सीरियस लुकिंग, बहुत ग्रिम हो जाता है वो. और उसकी जो दाढ़ी होती है, जैसे फिफ्थ स्टेज में वो बहुत ज़्यादा, फोर्थ स्टेज में वो जोशीला जवान था और बहुत इनफॉर्मल सा उसकी दाढ़ी थी, वो जैसे चीते की दाढ़ी होती है, इनफॉर्मल कट था उसका, क्योंकि वो हीरो बनना चाहता था. लेकिन यहाँ पे अब फॉर्मली कट शेप्ड वो बियर्ड है उसकी, फॉर्मल बियर्ड है, फॉर्मल कट है उसकी बियर्ड का, तो वो बड़ा सीरियस नज़र आता है, बड़ा डिसेंट नज़र आता है.
Then in the sixth stage of his life, man grows old. यहाँ पे वो थोड़ा बूढ़ा हो गया. He looks quite ridiculous in his movements. अब उसकी movements में उसकी जो हरकत है, उसकी चाल ढाल जो है, उसमें थोड़ी सी लग्जिश आ जाती है. He wears glasses because his eyesight is weak. अब उसकी नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है. उसने glasses पहन ली हैं. His shoes become wide for his feet. उसके पाँव पे उसके जो shoes हैं वो भी खुले हो गए हैं. His voice suffers a change. उसकी आवाज़ भी अब चेंज होना शुरू हो गई दोबारा. एक श्रिली वॉइस उसकी हो गई. अब आवाज़ दोबारा से पतली होना शुरू हो गई. इट बिकम्स अ श्रिल एंड क्विवरिंग विसल्स. और समटाइम्स जब वो बोलता है तो थोड़ी सी आवाज़ कांप भी जाती है और विस्लिंग साउंड उसके मुंह से आवाज़ विस्लिंग साउंड्स की आवाज़ आती है. So he has entered into an old age now. However, in the final stage, that is the seventh stage of man's life, the man turns into a child once again. और फिर दोबारा जैसे फर्स्ट स्टेज पे वो एक इन्फेंट था, उसको कुछ पता नहीं था. सेवंथ स्टेज is again the same as the first stage, that is the man turns into child. इंसान फिर बच्चा बन जाता है. He seems to forget everything. वो हर चीज़ भूलता हुआ नज़र आता है. He becomes toothless. उसके दांत जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं. उसके मुंह में दांत नहीं होते, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं. His eyesight is weakened और बहुत नज़र बहुत कमज़ोर हो जाती है. He is deprived of taste. उसको किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता. He is ready to leave this world. This seventh stage is the last stage of man's life when he is quite ready to leave the world. अब वो डिपेंडेंट हो जाता है. अब दुनिया में वो हेल्पलेस हो गया है. It means that he is ready to go. So Shakespeare has the 7 stages of man's life. इंसान की जिंदगी की 7 stages हैं with a touch of satire and cynicism. यहाँ पे satire भी हमें नज़र आता है, तंज़ो मज़ाह हमें नज़र आ रहा है, और cynicism he becomes थोड़ा cynicism है, distrust है उसका. In each stage man imagines himself as great and important. हर स्टेज पे इंसान अपने आप को बहुत अहम समझता है. But there is something ridiculous in his behavior. लेकिन वो समझता तो बहुत अहम है, लेकिन ऑटोमेटिकली जो चेंजेस आती हैं, फिजिकल चेंजेस आ रही होती हैं या उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही होती हैं वो बड़ी ridiculous होती हैं. All through his life, Shakespeare has described each of the man's life stages with a great economy of words. He uses living and concrete images to describe the different stages of life. बड़ी वाज़ेह मिसालें हमारे सामने रखता है शेक्सपियर हमारे ज़िंदगी की different stages को describe करने के लिए. The use of the word mewling of the infant's cry and the school's boy's reluctance to go to school described in phases like creeping like a snail are examples of living images. जब अब वो कहता है कि he is mewling in the nurse arms. Now see, mewling means small noise like a cat. यानी वो ऐसी आवाज़ें निकालता है बिल्कुल एक कैट की तरह, एक किटन की तरह की आवाज़ें निकाल रहा है. तो it gives us clear images of an infant as or a child when he cries. It attracts our sense of hearing. It is audible, and the schoolboy's reluctance to go to school is described as creeping like a snail. So these are living images used by William Shakespeare. Now stanza number 1. All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. He acts being 7 ages. Now, explanation. In the first line of all the world's a stage, the speaker, now see Jacks. Now, Jacks begins with the famed lines that later came to denote this entire speech. He declares that all the world's a stage and that the people living in it are merely players. This setup, what is one of the most skilled conceits in all of English literature. Every person, no matter who they are, where they were born, what they want to do with their lives, wakes up every day with a role. They enter, they exit, just like performers. हर दिन हम सुबह जागते हैं, हमने डिफरेंट रोल्स प्ले करने होते हैं.
वी हैव टू प्ले आवर पार्ट. हर रोज़ फिर हम सो जाते हैं, फिर जागते हैं, फिर हम अपने रोल्स प्ले करते हैं, यहाँ तक कि फिर दुनिया से हम चले जाते हैं. इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट एट दिस पॉइंट दैट दीज लाइन्स वुड बी read on stage in front of an audience. The extended metaphor would not be lost on anyone listening or watching. So the actor is declaring to the audience that you are just as much of an actor as he is. वो जो बोल रहा है, जैक्स की स्पीच है ना ये, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज विच इज टेकन फ्रॉम, इट्स एन एक्सर्प्ट फ्रॉम एज यू लाइक इट. सो जैक्स जो है वो हमें यही कहता है कि हम भी एक्टर्स हैं. Before the listener starts to get concerned about the role they have to play, Jacques adds that a man or woman plays many different parts in their lives as an actor does. Whoever the actor may be on stage is not only Jacques, he is only many other characters throughout the career. It's in the fifth line of the monologue that Shakespeare brings in a slightly more complex concept, that of 7 ages of humankind. यानी ये जैक्स की स्पीच है, वो कहता है कि तमाम मर्द और औरतें जो हैं वो प्लेयर्स हैं, एक्टर्स हैं. दुनिया में वो अपने मुख्तलिफ औकात में वो दाखिल होते हैं और फिर अपने ही औकात पे मुख्तलिफ औकात में वो दुनिया से चले भी जाते हैं. और एक बंदा अपनी ज़िंदगी में बहुत से पार्ट प्ले करता है. और फिर लास्ट लाइन में वो कहता है कि ही एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, 7 रोल्स वो प्ले करता है. So it's a monologue. This whole speech is a monologue. And as you know, monologue is a long speech by one person in a play. एक play में एक बंदा जो है वो बोलता है. It's a speech. Sometimes soliloquy. ये soliloquy भी होती है. Other times spoken to other characters. Sometimes वो खुद से बात कर रहा होता है but it is meant लोग सुन रहे होते हैं. Sometimes वो directly address करता है audience को. At first, the infant, mewling and perking in the nurse's arms, and then the winning schoolboy with his satchel and shining morning face creeping like snail, unwillingly to school. जैसे मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले वो newborn baby है at the first stage of his life. The first stage of man's life is his infancy. During his infancy, he cries and throws up milk and vomits when he is in the hands of a mother or a nurse. At this stage of life, man is quite helpless being an infant and totally depends on mother or on his nurse. His eyesight, taste, smell, hearing is not fully developed. That's why he relies on other for his food and other necessities of life. जिंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो दूसरे लोगों पे डिपेंड करता है. Nurses or mothers are a great resource to show how to hold, burp, change and care for your baby. Now, they are weak and delicate and need a lot of care and help. The second stage is his boyhood. This is his school going period. It is the time when he complains all the time. हर वक्त शिकायत करता रहता है क्योंकि वो स्कूल जाना नहीं चाहता. His face shines like the bright and fresh morning. He carries his school bag and unwillingly goes to school at the speed of an insect. एक कीड़े की तरह वो, स्नेल की तरह वो रेंगता हुआ स्कूल जा रहा है क्योंकि वो जाना नहीं चाहता. A school going boy is pampered and never wants to leave the comfort of home and hearth. ज़ाहिर है घर की जो वो सुकून और आराम है वो उससे नहीं निकलना चाहता. Leaving warm bed, comfort and care seem quite unpleasant for him. So the poet has used a simile to compare the slow movement of a boy to a snail, creeping like a snail. He used enjambment in the third and fourth line. आप देखिए थर्ड लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है. With his satchel, satchel के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है. When the line in the poem ends without any punctuation mark, it is called it is a literary device, that is enjambment. Similarly, in the fourth line, creeping like snail, snail के बाद कोई punctuation mark नहीं है, so it is called enjambment. A literary device which is used here, and simile is also used, that is creeping like snail. ठीक है, this is called simile. वो तशबीह दे रहा है, मुशाबियत कर रहा है. Stanza number 3, and then the lover, sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress eyebrow. This is the third stage of man's life. Now he is a grown-up person and assumes the form of a lover.
He grows into a young man full of desires, ambitions, and dreams. He becomes a romantic young man. It is the time when he loves his beloved ardently. He sighs like a furnace or an oven. हर वक्त आहें भरता रहता है, दुख भरी आहें भरता है, जलता रहता है फर्नेस की भट्टी की तरह. He writes a song in praise of his beloved's eyebrows. He composes sad songs and can't control his sad feelings. He also sings such songs again and again as he burns in his emotions. Here the poet has used synecdoche that made to his mistress eyebrow and then the justice. He also sings such songs again and again as he burns in his emotions. Here the poet has used synecdoche made to his mistress eyebrows and then the justice. Then a soldier, full of strange oaths and bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation, even in the cannon's mouth. Explanation is, in these lines the poet shows the fourth stage of man's life. When he matures, he becomes a soldier. He takes strange oaths. He has a beard like a tiger or a leopard. He is fierce like these animals. लेपर्ड और टाइगर से उसको इसलिए कंपेयर किया गया कि वो खुद भी बहुत लेपर्ड की तरह और टाइगर की तरह बड़ा खौफनाक हुआ होता है इस स्टेज पे. ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ लाइफ मैन इज जेलस फॉर ऑनर ऑफ अदर्स. यानी वो दूसरों की ऑनर देखता है तो वो जेलस हो जाता है, वो चाहता है उसको भी इज्जत मिले, शोहरत मिले. ही इज़ वेरी क्विक टेम्पर्ड एंड ओन्स क्वेरल्स. वो लड़ाई झगड़ों में भी बहुत इन्वॉल्व रहता है. सिंस ही इज़ वार्म ब्लडेड ही लुक्स फॉर टेम्पररी रेपुटेशन एंड फेम. वो आर्जी इज्जत और वकार और शोहरत की तलाश में होता है. टू अचीव दिस टेम्पररी फेम ही इज इवन रेडी टू गो इनटू द माउथ ऑफ अ गन. यानी वो तो कैनन्स तोपों के सामने भी खड़े होने के लिए तैयार होता है ताकि उसकी शोहरत हो कि वो हीरो है. He is willing to risk dangers. The poet has used simile like a pard to compare the roughly grown and informal beard of the young man with the leopard. So enjambment is used in the third line of the stanza here. Now, like a pard, simile and enjambment, two literary devices have been used in this stanza. Stanza number 5, and then the justice. In fair round belly, with good capon lined, with eyes square and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. This is the fifth stage of man's life. Here man becomes middle-aged and mature like a judge and has a fair round belly full of the meat of chickens. Perhaps he has become fit because he eats meat and fat castrated cogs in excess. Castrated means के official, एक official बंदा होता है, and fat castrated cogs in excess. Now he has eaten these things like chicken meat and other meats in quite excess. It is the stage when he is firm, serious, grim. His conversation is full of many different proverbs of the world. वो मुहावरत वो लैंग्वेज बोलता है, मुहावरों की ज़ुबान बोलता है, from the past and also full of examples from the modern age. He has beard of formal cut and as such plays this part of his life. At this stage man becomes decent, sober, mature and wise. For wise and mature man the poet has used synecdoche, the justice. Stanza number 6. The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon, with spectacles on nose and pouch on side. His youthful hose well saved the world too wide for his shrunk shank, and his big manly voice turning again toward childish treble, pipes and whistles in his sound. This is the sixth stage of man's life. In this stage, man shifts from middle age to old age. Now he wears pantaloon with slippers on his feet. वो loose pants पहनता है और उसके पाँव में slippers होते हैं. He's become thin, weak, lean. बहुत कमज़ोर हो जाता है, but bony, skinny सा वो हो जाता है. He wears now spectacles on his nose. उसकी आँखों पे, उसके नाक पे उसने स्पेक्स रखी हुई होती हैं.
ऐनक रखी उसकी नाक पे लूजली रखी हुई होती है बिकॉज ऑफ हिज वीक आई साइड. ही हैज़ ऑल्सो अ पर्स बाय हिज साइड इन विच ही कीप्स मनी एंड टोबैको. और चूंकि वो भूल जाता है चीज़ें रख के, तो उसने एक पाउच सा हैंग किया होता है अपने साथ, अपने शोल्डर के साथ, जिसमें उसका टोबैको, अगर वो स्मोकिंग करता है तो उसने सिगरेट्स रखे हैं या पैसे रख लेता है. ही यूजेज लॉन्ग सॉक्स विच ही हैज़ सेव्ड ड्यूरिंग हिज यूथ. और जवानी की जो सॉक्स थी, अगर अब वो पहनता है तो वो बहुत ज़्यादा उस पर, नाउ दीज सॉक्स आर very loose on his lean legs and look very strange. His big, loud, manly voice has turned into the shrill voice of a child. एक बच्चे की, पहले उसकी बड़ी मैनली किस्म की वॉइस थी, अब उसकी आवाज़ जो है वो श्रीली वॉइस है, बच्चे की तरह की. Since some of his teeth have fallen, कुछ उसके दांत भी गिर चुके हैं. Whenever he tries to speak, it seems as if he were playing upon a pipe or as if he were whistling. जब भी वो बोलने की कोशिश करता है, ऐसे लगता है जैसा कि वो या तो वो बांसुरी बजा रहा है, क्योंकि उसकी वॉइस जो है वो पतली हो जाती है, या वो सीटी बजा रहा है, उसकी ऐसी आवाज़ निकलती है. And stanza number 7, last scene of all that ends this strange eventful history is second childishness and mere oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. This is the last stage of man's life. In this stage he changes from his old age to the oldest one. Old से oldest की तरफ चला जाता है. This is a strange stage of life. In this period, all the life which has been previously full of strange events comes to an end. पिछली तमाम ज़िंदगी, बचपन से लेके और जवानी में जो कुछ वो लड़ाइयाँ झगड़े करता रहा, इमोशनल रहा, फिर उसने जॉब की, वो एक प्रोफेशन में आया, वो फिर मुख्तलिफ लोगों से उसके मैटर्स चलते रहे, और फिर एंड पे वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है. अब दिस इज़ लाइक हिज सेकेंड चाइल्डहुड. अब ये उसका दूसरा बचपना है. In this stage he is childish as well as childlike. बच्चे की तरह वो हो जाता है. At this stage he forgets almost everything. सब कुछ भूल जाता है. His memory becomes very weak. He loses teeth. फिर कोई दांत नहीं रहते उसके मुंह में. उसकी eyesight चली जाती है. वो टेस्ट नहीं रहता उसका. He is without everything. Sans mean without. बगैर दांतों के, बगैर आंखों के यानी नज़र के, और बगैर टेस्ट के वो हो जाता है. This is the stage in which he completes the drama of his life. यहाँ जिंदगी का वो जो ड्रामा है वो ख़त्म हो जाता है, and leaves the stage of this world for the next. और अगली दुनिया के लिए जाने, अगली दुनिया में दाखिल होने के लिए वो इस दुनिया के स्टेज को छोड़ देता है. Coming to question number 1. This poem is an extended metaphor. What are the two things being compared? ये पोम ही पूरी जो है, ये एक नज़म एक्सटेंडेड मेटाफर है, तशबीह है. कौन सी दो चीज़ें हैं जिनको आपस में तशबीह दी गई, जिनको तशबीह दी गई? William Shakespeare's famous All the World's a Stage metaphor from As You Like It, the world would be the tenor and the stage is the vehicle. Through extended metaphor, Shakespeare builds an evocative comparison of human life and existence to the drama his audience sees before them. The entire speech is an extended metaphor and itself is more like symbolism. Men and women are portrayed as players, whereas life is portrayed as the stage. The speech describes the 7 ages of being human according to the writer and shows universal characteristics of many humans as their bodies and needs change. Actors playing roles have entrances and exits during a performance. Life also has its entrances and exits. People are born and die and pass in and out of our lives. Just an actor plays a variety of roles in life, so too do men and women play different roles or pass through different stages or 7 ages of their lives. Question number 2. There are 7 stages or acts of a man listed in the poem. What are they? Now, I have briefly described them. In the first stage, in this phase of his life, man appears as a child in the world who cries in the arms of his nurse for one reason or the other. In the next phase of his life, a man appears as a school-going child who marches to the school unwillingly. In the third stage of his life, a man plays the part of a lover. He grows into a young man full of desires, ambitions, and dreams. In the fourth stage of his life, man becomes a foul-mouthed soldier who has learned queer words, hankering after temporary and bubble fame.
In the fifth stage of his life, he becomes a judge. He becomes mature and experienced in his thoughts. Then in the sixth stage of his life, man grows old. He wears glasses because his eyesight is weak. His shoes become wide for his feet and pantaloon quite loose. His voice becomes a shrill and quivering whistle. However, in the final stage, the man turns into a child once again, quite forgetful, without the sense of smell, taste, and without everything. Question number 3. What is meant by the word oblivion in the context of the poem? All the world's a stage. The word oblivion is used for the last stage of man's life. Oblivion, which is called the second childishness of man. Oblivion means the state of forgetfulness. Literary meaning जो oblivion का है वो forgetfulness है. The state of forgetfulness. So at this stage of man's life, he forgets almost everything. His memory becomes very weak. His life, all its intricate memories and details are lost. Question number 4. Then the soldier, full of strange oaths and bearded like a pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. What is the soldier ready to do? He is very quick-tempered and owns quarrels. Since he is warm-blooded and to achieve the temporary fame, he is even ready to go into the mouth of a gun. He is willing to risk dangers. So what is the poetic device used in the second line? A metaphor is used in the second line in which men and women are called mere actors and actresses. They are portrayed as players. What does bubble reputation mean? Bubble reputation means temporary fame. आर्जी जो शोहरत होती है. The poet means to say that man does things that make him look good even if they are pointless. Since man is warm-blooded at the stage of a soldier, he looks for temporary reputation and fame, and for this purpose he is even ready to go into the mouth of a cannon. Question number 5. What is the significance of the words entrances and exits in the poem, The Seven Ages? Through extended metaphor, Shakespeare builds an evocative comparison of human life and existence to the drama his audience sees before them. The entire speech is an extended metaphor and itself is more like symbolism. Men and women are portrayed as players, whereas life is portrayed as the stage. The speech describes the 7 ages of being human according to the writer and shows universal characteristics of many humans as their bodies and needs change. So actors playing roles have entrances and exits during a performance. Life also has its entrances and exits. People are born and die and pass in and out of our lives. Now question number 6 is identify various figures of speech in the poem. So the figures of speech which the poet has used is simile, and its examples are creeping like a snail, soldier, bearded like the pard. Metaphor, the entire speech itself is more like symbolism. Metaphor तो पूरी poem ही metaphor है. Men and women are portrayed as players where life is portrayed as the stage. So Shakespeare uses the stage as an extended metaphor. Now there is a repetition in the poem. Another figure of speech used in this monologue, words like sans, देखिए, sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. So there is a repetition of the word sans, and age, etc. are repeated for the sake of emphasis. Anaphora. Anaphora, it is used in the 8th and the 9th line beginning with the word and. Now see, it is used in the 8th. And shining morning face, creeping like snake. And one man in his time plays many parts. So this and, so he plays his part. So he says and then a justice. So Synecdoche made to his mistress eyebrows means in the beauty of his beloved, and then the justice. Justice is used as synecdoche, as I have already explained in the stanza. Alliteration is used like his shrunk shank. Now see, the first word shrunk shank. Quick in quarrel.
So it gives a rhythmic quality to the stanza or to the line. Onomatopoeia, pipes. Now see, onomatopoeia, the poet has used the word pipe, whistling. Now it sounds like the words presents the sounds like pipes and whistles. So this is called onomatopoeia. Now see, the next figure of speech is ascendaton. Ascendaton means it is a stylistic scheme in which no conjunction is used. Deliberately, conjunctions are omitted from the line or from the phrases or clauses. Now see, sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. There are no conjunctions here to join these words together. So this is ascendaton. Now question number 7. Write a well-integrated essay on different stages of man's life as mentioned in the above poem using pre-writing strategies. So growth is the increasing progress. Pre-writing strategies, first of all, we have to write introductory paragraph, then different stages of mankind when he passes through different stages of life. So there's an introduction. Growth is the increasing progress of human beings, specifically defined as the evolution of one's body until it reaches the complete stage of physical development. Development is the process of transition depending on the way of life of a person. This involves a transformation in our physical appearance, emotional and spiritual aspects of our life. The intellectual aspect of a human being will also be affected by this development. From infant to childhood, childhood to teenage years, adolescence, teenage years, adolescence to adulthood, massive development will surely happen. And it's an altercation that we won't expect to happen. Throughout this journey of a human life, each person will undergo through development and altercation in physical appearance, decision making, attitude, values, visions, relationships, opinions, likes, perspectives, flexibility in life, feelings, faith, etc. So these are different changes occurring at different phases of man's life. As an infant, babies are quite helpless and dependent on their parents that they will fulfill all their needs. From infants and toddlers, they develop into school-going children, very innocent and still dependent. They don't want to go to school and think the formal way of learning is weird and boring. So at the stage adolescence, the child grows into a lover at this teenage. However, there is one certain stage in our life when we think everyone seems to want love. So this is the stage of what we call teenage love. An adolescent through a period called puberty. Puberty usually takes place in the child's teenage years, starting from 13 years up to 19 years of age. Therefore, adolescents are also called teenagers. During the puberty, rapid growth and changes of the body take place. These include changes of the body shape, growing hair on some parts of the body. For example, boys grow hair on their faces, and also boys' voice becomes deep and rough. Similarly, at this stage, the behavior patterns and attitudes of the teenagers will change as they are independent in doing their day-to-day activities. People around 50 to 65 years old are called adults. They have become quite wise at this stage of life and work experience in different fields. Adults can reproduce, make their own families, and so continue the life cycle. So adults can be divided into young adults, middle-aged adults, and older adults. This is how you have to write the essay, and at the end you must write that, and the time comes when a person is ready to leave this world. Adults can be divided into young adults, middle age, older adults. So old age is an integral part of human life. It is the evening of life. It is unavoidable, undesirable, unwelcome, problem-ridden phase of life. It is ironical that however undesirable the old age is, it is bound to come in life. जितना हम चाहते हैं कि बुढ़ापा ना आए, लेकिन ये जिंदगी में ज़रूर आता है, because it is the part of life. A man is compelled to go through the pains and pleasures of this age, like the other phases of life, before making an exit from the mortal world. A man is good for nothing, as he is without eyesight, sense of smell, and taste. Now identify simple, complex, and compound sentences. I will tell you
During reading all the statements, I will explain what is complex sentence, what is compound sentence, what is simple sentence. Now see, we met rather few people who spoke English. अब आप देखें कि there are two parts of the sentence. We met rather few people. अगर मैं इस सेंटेंस को यहाँ पे ख़त्म कर देती तो इट इज़ अ कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेंटेंस. ये एक मुकम्मल जुमला है, ये खुद भी एग्जिस्ट कर सकता है, ये किसी दूसरे जुमले पे डिपेंड नहीं करता. लेकिन जब मैं कहूँगी हु स्पोक इंग्लिश तो आप कहेंगे कि व्हाट इज दिस इज इनकम्प्लीट, क्योंकि ये क्वेश्चन भी नहीं है. अगर ये क्वेश्चन होता हु स्पोक इंग्लिश तो फिर तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है, लेकिन ये तो है हु स्पोक इंग्लिश. तो आप हैरान होंगे, हु स्पोक इंग्लिश, व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट. So who spoke English depends on we met rather few people. Who spoke English जो है वो डिपेंड करता है किस पार्ट पे. We met rather few people, हम कुछ ऐसे लोगों से मिले जो इंग्लिश बोलते थे, जिन्होंने इंग्लिश बोली. So who spoke English depends on the other sentence. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बेटा ये तारीफ है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है और एक डिपेंडेंट होता है. ठीक है, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है जबकि दूसरा डिपेंडेंट होता है, वो उस पर डिपेंड करता है. दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. नाउ लेट अस सी द सेकेंड वन. आई बीन ऑन रादर टू मैनी प्लेन्स एंड ट्रेन्स रिसेंटली. नाउ सिंपल सेंटेंस है ना. देखिए ये एक ही स्टेटमेंट है, I've been on rather too many planes and trains recently. एक स्टेटमेंट है जिसमें कोई पार्टीशन नहीं है कि कोई ऐसा सेंटेंस जो कि ये कंप्लीट है. इट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, इट इज अ कंप्लीट होल. ठीक है. नंबर 3, वी ड्रोव राइट अप टू कराची इन 2 days. हम 2 दिनों में कराची पहुंच गए. सिंपल सेंटेंस. इट इज वन इंडिपेंडेंट सेंटेंस, दैट्स इट. नंबर 4, आई डोंट केयर हाउ एक्सपेंसिव इट इज. आई डोंट केयर. देखिए आई डोंट केयर ये कंप्लीट सेंटेंस है. मैं यहाँ पे इसको रोक लूँ तो ये कंप्लीट, ये मीनिंग है, मीनिंगफुल सेंटेंस है. हाउ एक्सपेंसिव इट इज, कोई अगर यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क होता, एक्सक्लेमेशन मार्क हाउ एक्सपेंसिव इट इज, तो फिर ये कंप्लीट होता. अगर ये क्वेश्चन होता हाउ एक्सपेंसिव इट इज, फिर ये कंप्लीट होता. लेकिन ये तो क्वेश्चन भी नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी नहीं है, इसलिए ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता. हाउ एक्सपेंसिव इट इज, इट डिपेंड्स ऑन आई डोंट केयर. तो आई डोंट केयर एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और हाउ एक्सपेंसिव इट इज डिपेंड कर रहा है उस पर. दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. नंबर 5, 2 minutes ago the child was fast asleep but now he is wide awake. Compound sentence. What is compound sentence? Compound sentence are two independent sentences which are joined together with the help of conjunction. Compound sentences बेटा 2 independent sentences होंगे जो खुद भी अगर उनको एक दूसरे से इलादा कर दिया जाए तो वो एग्जिस्ट कर सकते हो, कंप्लीट मीनिंग देते हो. लेकिन 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जब कॉन्जंक्शन की मदद से हम ज्वाइन कर देते हैं तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस. 2 minutes ago the child was fast asleep. देखिए ये कंप्लीट सेंटेंस है, यहां फुल स्टॉप भी आ सकता था. नाउ ही इज वाइड अवेक, ये कंप्लीट सेंटेंस है. 2 कंप्लीट सेंटेंसेस को विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन बट वी हैव ज्वाइंड. 2 कंप्लीट सेंटेंसेस को हमने कंजंक्शन बट की मदद से एक दूसरे से जोड़ दिया. अगर इनको इलादा भी कर देंगे तो ये कंप्लीट मीनिंग देंगे, ये इनका अपना एक अलग वजूद है. सो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस. Number 6, he is not tall enough to be a soldier. Simple sentence क्योंकि एक complete independent sentence है. Number 7, I guess he just doesn't respect you. Simple sentence. Number 8, I've got 4 sisters and each of them is quite different from the other. Compound sentence है. देखिए I have got 4 sisters, ये एक अलग sentence है. Each of them is quite different from the other, एक अलग sentence है. और कंप्लीट सेंटेंसेस हैं दोनों. लेकिन 2 कंप्लीट और इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को कंजंक्शन की मदद से जोड़ दिया गया. दिस इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस. नंबर 9, यू कैन ईदर कम विद मी नाउ और वॉक होम. नाउ सी दिस इज कंपाउंड सेंटेंस. वॉक होम हम किसी से भी कह सकते हैं, वॉक होम.
घर चले जाओ. You can either come with me now. तुम मेरे साथ आ सकते हो. Or with the help of or, we have joined two different sentences. This is called compound sentence. Number 10, he will never leave home because he hasn't got the courage to. Now, complex sentence. He will never leave home. Complete sentence है. He hasn't got the courage to. Courage to what? Complete नहीं है कि उसके पास किस चीज़ की courage नहीं है. जब तक कि हम इसके साथ he will never leave home को नहीं रखेंगे तो ये मीनिंग नहीं देगा. So this is called complex sentence. When all else fails, read the user manual. Complex sentence. When all else fails, ये देखें ये incomplete sentence है. Read the user manual complete है. So, first part of the sentence depends on the other part. This is called complex sentence, जिसमें एक dependent है और एक independent है. Number 12, it was Saeed who paid for the drinks. Who paid for the drinks? Depends on it was Saeed. एक independent और एक dependent. So, it's a complex sentence. Who paid for the drinks? अकेला exist नहीं कर सकता. Number 13, we have to go to bed when the clock chimes 10 o'clock. We have to go to bed when the clock chimes 10 o'clock. When the clock chimes 10 o'clock, ये depend कर रहा है, we have to go to bed. ये independent clause है, we have to go to bed, और depend कर रहा है when the clock chimes 10 o'clock. So it is complex sentence. आप ये याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा उस पर डिपेंड कर रहा होता है. कंपाउंड में दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको मिला के उनको कॉन्जंक्शन की मदद से आपस में जोड़ा जाता है, लेकिन अगर उनको अलग कर दिया जाए तो वो एग्जिस्ट कर सकते हैं. और सिंपल सेंटेंस वो एक ही इंडिपेंडेंट. नाउ नंबर 14, अरशद लाइक्ड सलमान्स फ्रेंड एंड ही ऑल्सो लाइक्ड हिज कजन. Now, compound sentence, he also liked his cousin. Arshad liked Salman's friend. They are two independent sentences which are joined together with the help of conjunction. And the big brown dog ran after the blue and red bell. एक ही simple sentence है. Zakaria and Isa Khan rode their bicycles after they ate lunch. Now see, after they ate lunch depends on Zakaria and Isa Khan rode their bicycles. So this is complex sentence. The teacher and the principal met in the hall near the library. This is a simple sentence. Many brave soldiers fought in the war and they received medals. They received medals. Many brave soldiers fought in the war. दो different independent sentences है जिनको and की मदद से एक बनाया गया. This is called compound sentence. इनको अगर एक दूसरे से इलादा कर देंगे तो ये फिर भी complete meaning देंगे. They can exist independently. Number 19, the drummers played a long time but the piano players stopped early. ये भी compound sentence है. दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को कॉन्जंक्शन की मदद से जोड़ा गया. नंबर 20, बिफोर द क्वीन रोड इन द परेड शी गेव अ स्पीच. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. शी गेव अ स्पीच, ये तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, लेकिन बिफोर द क्वीन रोड इन द परेड ये डिपेंड करता है, ये इनकम्प्लीट है जब तक हम अगला पार्ट इसके साथ अटैच नहीं करेंगे. सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. आफ्टर मिडनाइट द घोस्ट्स विल कम आउट ऑफ द हॉन्टेड एटिक. आफ्टर मिडनाइट The ghosts will come out of the haunted attic. एक independent sentence है. There are no independent and dependent sentences here, so it is simple sentence. And the last one is she dropped the pan and the plate, but she held on to the spoon. This is compound sentence. She held on to the spoon. She dropped the pan and the plate. दो independent sentences हैं. इनको इकट्ठा किया गया with the help of conjunction, that is but. That's all for today. I hope you have liked